Good evening, everyone. Topic of today's session is investment opportunity with DSP Global Equity Fund, Gate City. For this, we have invited Mr. Mohit Rajput, Business Development, DSP AMC. Now, I would like to request sir to take the session forward. Over to you, sir. So, as mentioned, my name is Mohit. I sit out of the DSP gift office here in Gandhinagar, and we are part of DSP IFSC unit, which is International Financial Services Center. And we have recently come up with the new product, the DSP Global Equity Fund, which is the reason for our call today. I will give a brief introduction about the Gift City ecosystem, what we do out of Gift City over here, and then I can go into the product and the process itself. So give me 1 second. I'm quickly going to share my screen right now, so we can just a little bit information about the DSP gift ecosystem. So basically, Gift City here in Gandhinagar is a special economic zone where we enjoy a few advantages like tax benefits and stuff. But the main purpose why the government of India has enabled this option is to take advantage of the foreign investment that are lying outside India. So that is the main purpose of our of establishing this entity. Now, apart from the benefits that the tax and everything, there's no GST applicable, there is no stamp duty applicable, and if you set up your own distribution shop here at Gift City, there's no income tax as well for any businesses. So those are the few benefits that you get while doing business at Gift City. We are regulated by IFSCA. I'm sharing my screen. Please let me know. Sorry to interrupt you, but he Yeah, can continue in both languages, Hindi and English both. हिंदी एंड इंग्लिश बोर्ड ठीक है सर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट ठीक है तो हाँ मतलब गिफ्ट सिटी का फायदा यही है बेसिकली कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिनको इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है उनको टारगेट करने के लिए हमने ये बनाया है सो इट इज approved by the government of India under the Special Economic Zones Act. Taxation wise, it's a free trade zone. Currency is USD denominated. So whatever products that we have out of Gift City, especially at DSP, all the products are only in USD. हमारे पास कोई किसी भी और करेंसी में इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन एवरीथिंग इज ओनली इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशंस एंड एज आई मेंशन IFSCA which is International Financial Services Center Authority ये है regulator in IFC Gift City. Now the type of funds that we have at Gift City is basically we have two type of funds. One is an inbound fund, other is an outbound fund. Inbound fund क्या होता है? That is accepting money from NRs, the investors which are outside India, who wants to invest in Indian markets. तो NRIs जिनके पास good Indian exposure नहीं है, उनके लिए ये product है. ठीक है and the second one is an outbound fund. Outbound fund is for Indian investors who wants to invest outside India or global securities में. क्योंकि हो क्या रहा है ना कि इंडिया ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग मार्केट ग्लोबल मार्केट में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं सो अगर किसी इंडियन इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया पे इन्वेस्ट करना है देन वी हैव आउटबाउंड फंड्स और आउटबाउंड प्रोडक्ट्स फॉर देम वेयर द 100% एक्सपोजर इज इन ग्लोबल securities or global equities. So these are basically the two type of products that we have at Gift City. Now I will quickly go into the product that we are looking to discuss today, which is the Global Equity Fund. Just give me 1 second. I'm going to also open the PPT for that product. Okay. So as you can see on my screen, के Global Equity Fund नाम है. So this is a completely equity product. इसमें कोई debt instrument, कोई ऐसा कोई भी specific instrument नहीं है. 100% equities ही होंगी. Now why invest globally? वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं बट द मेन थ्री रीजंस व्हाई समबडी वांट टू इन्वेस्ट विद आउटसाइड इंडिया सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑल्दो इंडियन मार्केट्स आर वेरी गुड they have ample of opportunities right now we are seeing some really good returns in the Indian market especially पिछले 10 सालों में काफी बेहतरीन है हमारा मार्केट but there is also opportunities lying outside India. Yes Rajesh ji, this fund the global equity fund that I'm discussing is an outbound fund only. So yes,
तो डाइवर्सिफिकेशन का तो बेनिफिट मिलता ही है आपको। सेकेंडली यूएस गोल्स। सो लेट्स से किसी को प्लान करना है यूएस में मूव होने में इन द नेक्स्ट 5 years, और दे आर प्लानिंग फॉर देयर किड्स एजुकेशन, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है यूएस में, खुद सेटल होना है, और फॉर एनी अदर रीजन अगर आपको यूएसडी का यूज होगा इन द नेक्स्ट 3, 5, 7 years, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यू। क्योंकि ऑन एन एवरेज सिर्फ पिछले 10 सालों में देखें तो डॉलर हैज अप्रिशिएटेड 3-3.5% कंपेयर टू आईएनआर। तो इन इटसेल्फ इट्स अ गुड प्रोडक्ट कि आपको आईएनआर से यूएसडी के अगेंस्ट हेजिंग मिल जाता है इसमें। एंड द थर्ड इज अपॉर्चुनिटी टू ओन ग्लोबल बिजनेसेस। We what most of the apps, clothes, whatever we are using on a day-to-day basis, most of us are using the products that are like Nike shoes, Puma shoes. We are driving Volkswagen, BMWs, and all those fancy cars. So we want to be a part of those businesses as well. So this product itself will give you exposure in all these companies. Not exactly in all these companies, but around these companies, where you can grow along how these companies grow. So these are the main three reasons to invest beyond India. So जैसा मैं मेंशन कर रहा था कि although Indian market is very huge, we are the fourth largest economy as of now. We still have to cover 95-96% of the rest of the world, because अभी we are only 3 to 4% of global market cap. Secondly, डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ग्लोबल इक्विटीज हैव रिलेटिवली लोअर कोरिलेशन टू इंडियन इक्विटीज। मतलब अगर इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रहा है बेटर, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस के ग्लोबल मार्केट भी सिमिलर वे से परफॉर्म करेगा। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसा कहा, यूएसडी गोल्स, इफ समबडी वांट्स टू सेंड देयर किड्स अब्रॉड, किसी को सेटल होना है, और फॉर एनी रीजन सिंपली किसी को वेकेशन ही करना है आफ्टर 3 to 5 years एंड दे आर स्टार्टिंग टू प्लान नाउ, इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर देम, ताकि वो आईएनआर में इन्वेस्ट करके यूएसडी में पैसा ले सकते हैं, विच दे कैन यूज फॉर देयर ट्रैवल्स और एनी अदर पर्पस। एंड जस्ट दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या बता रहे हैं, पिछले 10 साल के रिटर्न्स। सो 2014 से लेकर 2024 तक अगर हम देखें तो इंडिया ने सिर्फ 2 बार आउट परफॉर्म किया है वर्ल्ड के टॉप मार्केट्स को। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2015 में जापान, 2016 और 22 में कनाडा, 2017 में और 2024 में चाइना, 18, 19 और 21 में यूएस। तो वी हैव वेरी गुड मार्केट्स आउटसाइड इंडिया एज वेल, जहां पे हम डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ग्रोथ का भी एडवांटेज ले सकते हैं। So that is one of the main reasons to invest in this product. Now the fund structure. So this is an actively managed product. ये कोई फीडर फंड नहीं है, कोई पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिवली मैनेज प्रोडक्ट रहेगा। द टारगेट आर रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स, ऑल्सो कॉर्पोरेशंस कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट, एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स। दीज टू कैन इन्वेस्ट वाया द ओपीआई रूट, यानी कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट जो रहता है, उस रूट से ये लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। For an Indian investor, the maximum limit is 2,50,000 US dollar. That is for every year per PAN. Or for OPIs or corporations, it is up to 50% of the net worth as of their last audited balance sheet. So really good scope for investing outside India. Even if you see $2.5 lakh, very good scope. So yeah, the Indian investor will invest into the global equity fund, and then the global equity fund will invest into the overseas securities. Now, the key markets where the fund will invest. So because this fund is predominantly targeting countries जहां पे जो सिक्योरिटीज रहेंगी या जो स्टॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे जिनका मार्केट कैप होगा 30 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड अबव, दिस इज व्हाट आवर फोकस कंट्रीज आर। ऐसी कंट्रीज हैं यूएस, इन यूरोप दैट इज यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। दीज आर द मेन कंट्रीज जहां पे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट कैप 30 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है, जहां पे ग्रोथ भी है। सो द पोर्टफोलियो विल हैव अराउंड 30 to 50 stocks, and again we are not agnostic to any index, any country or any specific sector. जहां पर भी फंड एडवाइजर एंड फंड मैनेजर को वैल्यू दिखेगी, दे विल इन्वेस्ट इनटू दिस प्रोडक्ट। देयर इज नो स्पेसिफिक परसेंटेज के भाई हम
सिर्फ 20% यूएस में करेंगे या 30% यूएस में करेंगे या 40%, ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। मॉडल पोर्टफोलियो हमारा अनाउंस हो जाएगा 18th ऑफ सितंबर, देन यू कैन एक्चुअली सी कि कौन से स्टॉक्स हैं उसके अंदर। बट हमने कोई लिमिट सेट नहीं की है, देयर इज नो थ्रेशोल्ड फॉर अस ऑन वेयर वी विल बी इन्वेस्टिंग, व्हाट सेक्टर्स वी आर टारगेटिंग and where our funds will be allocated. We are very flexible in those terms. Now, in terms of the philosophy, it's a long term horizon and at least 3 to 5 years का जिसका टाइम होराइजन है जिस इन्वेस्टर्स का, बिकॉज 100% इक्विटी है तो रिस्क इसमें उतना ही बढ़ जाता है। दैट इज वाई वी वांट इन्वेस्टर्स, only those investors into the portfolio that has a long term horizon, that are looking to grow in the next 3 to 5 years. Now, in terms of the fund features, so this is an open-ended fund, and right now our NFO was going on until September 12th. Right now we are not accepting any new applications. From September 22nd, Monday, new applications आप भेज सकते हो for folio creation and for funds. So this is managed by fund management entity which is DSP Fund Managers IFSC. So this is based out of Gift City, Gandhinagar, and our fund advisor is DSP Asset Managers, which is also our parent company based out in Mumbai. इसमें दो शेयर क्लास होंगे, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए फॉर एडवाइजर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो आते हैं, सेकंड इज फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। फॉर बोथ द शेयर क्लास द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज $5,000। इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू दिस फंड, न्यू प्रोडक्ट है तो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम है $5,000, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज। उसके ऊपर देयर इज नो मल्टीपल या फिर कोई स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स नहीं है। 5,000 के ऊपर वो लोग 5,500 भी कर सकते हैं, 6,000 भी कर सकते हैं, वॉट एवर दे आर कंफर्टेबल डूइंग। एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 2,50,000 फॉर रेसिडेंट इंडियंस एज पर द LRS लिमिट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. So 5,000 is minimum, $2.5 is maximum for an individual. For corporates and for partnerships that want to invest, that is the maximum is 50% of their net worth. So this is the minimum amount and maximum amount. After this first investment of 5,000, अगर किसी को और पैसे इन्वेस्ट करने हैं, that is in a minimum of $500. 500 के बाद जितने भी उनको इन्वेस्ट करने हो, they can do it 500, 600, 1,000, 2,000, whatever they want to invest, they can invest. There is no restrictions on number of transactions, कितने भी बार कर सकते हैं, वीकली करना है वीकली करिए आप, मंथली करना है मंथली करिए, that is completely up to the investor. Now, there is no lock-in period, there is no entry load, but there is an exit load of 1% up to 24 months. If somebody wants to exit early from this fund, it would be 1% up to 2 years or 24 months. Now, this is a retail fund. It is completely based in USD, तो NAV declaration भी USD में होगा, इन्वेस्टर के जो परचेज रहेंगे वो भी USD में होंगे, और रिडेम्पशंस भी हम USD में ही प्रोसेस करेंगे। अगर किसी का अकाउंट INR में है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर INR में पैसा डिपॉजिट उनके अकाउंट में हो जाएगा। नाउ दिस इज इन रिगार्ड्स टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ। हाँ, NAV जो होगा वो हमारी वेबसाइट पे एवरीडे डिक्लेयर होगा, जस्ट लाइक अ रिटेल फंड और म्यूचुअल फंड जो डोमेस्टिक उसमें होता है। बट द मेन डिफरेंस एंड व्हाई समबडी वांट्स टू डू दिस थ्रू द गिफ्ट स्ट्रक्चर इज बिकॉज, जैसे कि आप अगर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में देखेंगे जितने भी इस तरीके के फंड्स हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर है या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, तो सेबी ने एक लिमिट सेट करी है $7 बिलियन की। तो जितने भी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, 7 बिलियन के बाद वो नया पैसा नहीं ले सकते किसी भी इन्वेस्टर से। मैनी फंड्स आर ऑलरेडी फेसिंग दिस इश्यू and those who are not will soon reach this limit, so they will not be able to accept any new money. पर इस फंड में ऐसा कोई लिमिट या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वंस दिस फंड इज लाइव, एक बार हम 7 बिलियन के AUM तक पहुंच गए, उसके बाद भी हम पैसा ले पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट गवर्नड बाय सेबी, वी आर गवर्नड बाय IFSCA और IFSCA, which is International Financial Services Center Authority here in Gift City, Gandhinagar. दे आर अवर रेगुलेटर, और उनके द्वारा ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। सो हाउ मच मनी वी वांट टू टेक फ्रॉम द इन्वेस्टर,
we can take. We are very flexible on our investment strategies as well, which is why it's a better structure to have through Gift City. सो या एनएवी भी रोज डिक्लेयर होगा, परचेज रोज कर सकते हैं, रिडेम्पशन रोज कर सकते हैं. रिडेम्पशन की टाइमलाइन इज 7 बिजनेस डेज इफ समबडी वांट्स टू रिडीम. 7 बिजनेस डेज के अंदर अंदर उनका पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा. 7 बिजनेस डेज क्योंकि यहाँ पे लाइक 7 बिजनेस मैं मैक्सिमम साइड पे कह रहा हूँ, इट कुड बी लेस देन दैट, बट बिकॉज काफी अलग अलग मार्केट्स में, जैसे साउथ कोरिया में पैसा इन्वेस्ट होगा, कभी कभी हांगकांग के मार्केट में होगा, सो टू गेट द क्लियरेंस डन एंड ऑल, that is why we are giving the timeline of 7 business days. Uske alawa, it will be a very smooth process to purchase and redeem every day. So this is more in regards to the product. Now another important topic is taxation. तो फंड का टैक्सेशन कैसे होगा? So this taxation of the fund itself will be done at the fund level. So the fund is set up as a trust. The trust will pay tax on long-term capital gains, short-term capital gains, and dividend income that is made on this product itself, ताकि जब रिडेम्पशन होगा और इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसा आएगा 2 साल 3 साल बाद, तो उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर ऑन द टैक्सेशन. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रेट हैं अराउंड 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट हैं अराउंड 42%, एंड डिविडेंड के गेन्स के टैक्स के रेट है 35%. लॉन्ग टर्म इज आफ्टर 2 years, शॉर्ट टर्म इज लेस देन 2 years, एंड डिविडेंड गेन्स जो डिविडेंड्स के ऊपर जो भी लगेगा वो. अब ये रेट्स कैसे आए हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, कि जैसे जो रेट्स है ना, दे आर मार्जिनल टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, एंड बिकॉज इट इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज आउटसाइड इंडिया, the rates are higher than what we pay in mainland India. Now the fund itself will pay the tax on all the capital gains every day. उसके बाद एक पोस्ट टैक्स एनएवी अनाउंस होगा हमारी वेबसाइट पे, तो जो भी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आएंगे उस दिन के वो उस स्पेसिफिक एनएवी पे पैसे रिडीम होंगे. तो जब पैसे इन्वेस्टर के अकाउंट में आएंगे, दे विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन देयर हैंड. That is why we are recommending everyone to only invest into this fund who has a timeline of more than 2 years. There is no lock-in period, but there will be a high short-term capital gains if somebody exits before 2 years, and 1% exit load. So that's why the timeline for this fund is at least 3 to 5 years in terms of investing. So this is more so in regards to the fund, and so no, we will not be doing any hedging for currency fluctuations. And will this fund only invest in US markets? No. US market में around 20 to 30% का exposure रहेगा. उसके अलावा we will also be investing in Canada, a couple of Chinese stocks. Chinese stocks हम खरीदेंगे through the Hong Kong exchange and through the US exchange. There will also be some exposure in Europe, some exposure in South Korea and Japan. So diversification तभी एक्चुअल में होगा क्योंकि सिर्फ यूएस में ही अपॉर्चुनिटीज नहीं है. There are opportunities elsewhere outside the US as well. We want to take advantage of those. So we will not be just putting all our eggs in one basket. US के अलावा भी हम इसमें पैसा invest करेंगे. So this is more so in regards to the fund structure. If anyone has questions on the fund structure, I can answer that now, or if you want me to go through the product process as well, and then we can take questions together. Okay, ठीक है, we can take it at the very end. तब तक if anyone has questions, please put it on the chat box. I'll try to answer it over here itself. Now the investor process. Give me 1 second. I'll share my screen as well for this. So there is a question that what about KYC? Yes. Yeah. So that will be in the process part. That's what I'm covering right now. Okay. I'll just zoom it a little bit so that everyone can see it properly. ठीक है? दिख रही screen? Yes, sir. Okay, perfect. ठीक है. So right now we are governed by IFSCA, and IFSCA के जो rules होते हैं, they are a little bit
different. ठीक है. So what we do is, first of all, we create a zero balance folio for the investor. उसके बाद the second step is fund remittance. Now what is the first step? So we will share the application forms and all the documents with all the investors. The investor will fill out the application form. एप्लीकेशन फॉर्म में दो चीजें बहुत जरूरी हैं. एक है CKYC नंबर या फिर किन नंबर. अगर मान लीजिए इन्वेस्टर के पास CKYC नंबर नहीं है, तो हमने FAQs जो प्रोवाइड की है उसमें एक फोन नंबर मेंशन्ड है जिसपे मिस्ड कॉल मार के अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से दे कैन गेट द CKYC नंबर. सो दे कैन मेंशन दैट सेम CKYC नंबर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म. अगर किसी इन्वेस्टर का CKYC हुआ ही नहीं है कभी, so they can fill the सरसाई फॉर्म. We have also sent सरसाई फॉर्म. तो वो सरसाई फॉर्म फिल करके अटैच कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ. एप्लीकेशन हैज टू बी प्रॉपरली फिल्ड, क्योंकि अभी जो हमारा एनएफओ हुआ, द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव नोटिस्ड इज किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेंशन नहीं करी है, या फिर किसी ने उसने एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करी है, या फिर उनकी बैंक डिटेल्स मिस हो गई हैं. सो ऑल दोज मैंडेटरी डिटेल्स हैव टू बी फिल्ड प्रॉपरली. CKYC नंबर आपको मेंशन करना रहेगा. अगर आपका CKYC नंबर नहीं है तो आप सरसाई फॉर्म अटैच करके उसके साथ भर सकते हो. उसके बाद आएगी KYC डॉक्यूमेंट्स. सो KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आर वेरी सिंपल. पैन कार्ड इज मैंडेटरी. दैट्स द फर्स्ट थिंग, बिकॉज दिस इज अंडर द LRS गाइडलाइन. तो पैन कार्ड इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. सेकंड रहेगा अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस. प्रूफ ऑफ एड्रेस में यू कैन गिव आधार कार्ड कॉपी, यू कैन गिव ड्राइवर्स लाइसेंस कॉपी, यू कैन गिव पासपोर्ट कॉपी, जो इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है वो. थर्ड डॉक्यूमेंट विल बी द बैंक कैंसल चेक. ये तीन डॉक्यूमेंट की कॉपीज लगेंगी. ऑल थ्री हैव टू बी सेल्फ अटेस्टेड. तो फर्स्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड हो गया सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, थर्ड इज ईदर द CKYC नंबर या फिर सरसाई फॉर्म. नाउ इन्वेस्टर वंस दे फिल ऑल द डॉक्यूमेंट, वो उस पर सिग्नेचर करेंगे. वेट सिग्नेचर इज ओनली रिक्वायर्ड, वी कैन नॉट डू E-साइन. तो इन्वेस्टर फॉर्म फिल करेगा, उसका प्रिंट आउट निकालेगा, उस पर वेट सिग्नेचर से साइन करेगा, पीछे अपने KYC डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा. जैसे ही उसने हार्ड कॉपीज में ये सारी इंफॉर्मेशन कर दी, फिर वो अपने या तो मोबाइल के थ्रू या फिर अपने स्कैनर के थ्रू वो सारी कॉपीज को स्कैन करेगा. एंड दिस ईमेल आईडी दे विल सेंड द कॉपीज. ईमेल स्कैन कॉपीज, हार्ड कॉपी नहीं, स्कैन कॉपीज ऑफ देयर फॉर्म्स along with all supporting document, they have to send it here. So this email ID is jointly shared with our team and CAMS team, because CAMS team is our RTA. They are the service provider that will be doing the folio creation. So considering they receive the documents and everything is correct on the document, no information is missing, within 2 to 3 days, the folio will be generated. The folio will be created. Once the folio is created, investor will receive a notification via email that आपका folio create हो चुका है. This is your folio number. Now you can transfer the money or you can do the remittance. This is the step one, where they fill out the forms, send the documents to us, scan copy, we create a folio. Now, once the folio is generated, once the folio is created, जो भी फिजिकल कॉपीज रहेंगी, जो भी हार्ड कॉपीज जिसपे इन्वेस्टर साइन करेगा, वो आपको DSP गांधीनगर, DSP फंड मैनेजर्स IFSC को कुरियर करना रहेगा. So this is our address in Gift City. We need these forms physical copies because this is a mandatory requirement from the regulator. And we do understand that sometimes it's hard for these copies to arrive, and sometimes investors have a hard time doing this, but there is no timeline for this. They can do it within 1 day, 2 day, 3 day. एक से दो हफ्ते के अंदर अंदर they can do it. We can do the folio creation, all the documentation through the scanned copies as well. We are not waiting for the hard copies to come to us for folio generation or unit assigning. Everything can be done via email, but they have to send us the physical copies once everything is done. ठीक है. So the first step was folio creation. Second step was fund transfer or remittance. अब इसमें we are not advising anyone to take a check. The remittance has to be done by the investor themselves, because ये अंडर LRS प्रोविजन के आता है. तो इन्वेस्टर को अपना पैन मैंडेटरीली बैंक को प्रोवाइड करना रहेगा. सो इन्वेस्टर की जो अमाउंट है, लेट्स से दे आर डूइंग $5,000 और $10,000, तब तक कोई इश्यू नहीं रहेगा. व्हाट दे विल डू इज दे विल जस्ट सिंपली गो टू देयर बैंक्स वेबसाइट. दे विल फिल आउट द A2 फॉर्म, जो कि आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए यूज होता है. जब आप पैसे इंडिया से
बाहर ट्रांसफर करते हैं तो आप सेम डॉक्यूमेंट फिल करते हो। जो डिटेल्स भरनी रहेगी एप्लीकेशन के जो सॉरी अकाउंट डिटेल्स, बेनिफिशियरी बैंक डिटेल्स, स्विफ्ट कोड एंड ऑल ऑफ दैट, वो एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज पे ही प्रोवाइड की गई है। सो यू कैन यूज द सेम डिटेल्स, fill it on the bank's website and send the money to us. Sometimes some banks do not allow you to do it online. Sometimes your KYC is not up to date with them, or for any other reason they want you to come in person. तो आपको कभी कभी या आपको इन्वेस्टर को कभी कभी इन पर्सन भी जाना रहेगा बैंक में to do the fund transfer. One important thing is TCS. So if an investor is doing these kind of transactions up to 10 lakhs, there is no TCS. There will be no deductions. They will only have to pay the transfer fees and forex conversion charges. जो भी applicable हैं वो investor को bear करने रहेंगे. अगर they are doing the investment about 10 lakh rupees, तो वहां पे 20% TCS applicable हो जाता है, जो आपकी बैंक डिडक्ट करती है as per the RBI guidelines. वो पैसा एज एन एडवांस टैक्स इन्वेस्टर के पैन के अगेंस्ट डिपॉजिट हो जाता है, विच दे कैन क्लेम व्हेन दे फाइल देयर ITRs. एग्जाम्पल है, जैसे मान लो किसी इन्वेस्टर ने 15 लाख भेजा, तो 10 वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है उसका 20% विच इज अप्रोक्स 1 लाख रुपीस वो एडवांस टैक्स के तौर पे डिपॉजिट हो जाएगा, और डीएसपी के पास सिर्फ 14 लाख का रेमिटेंस आएगा. So this is something that you will have to tell the client before they do any investment. So approximately अगर कोई client $11,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो TCS के रेडियस में आएंगे. ये TCS RBI के द्वारा किया जाता है एंड द बैंक डिडक्ट्स इट. DSP का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है. अब इन्वेस्टर ने मान लीजिए $10,000 ट्रांसफर किए, डीएसपी के अकाउंट में $10,000 भेज दिए उन्होंने. जैसे ही वो ये ट्रांसफर करेंगे, उन्हें ट्रांसफर के बाद एक ट्रांसफर कॉपी मिलेगी, और काफी बैंक्स उसे स्विफ्ट कॉपी भी कहते हैं. सो वंस द ट्रांसफर इज डन, आपको सेम ईमेल एड्रेस पे जिसपे आपने फॉर्म्स भरने एप्लीकेशन भेजी थी फॉर फोलियो क्रिएशन, ऑन द सेम ईमेल आपको आपका फोलियो नंबर और आपका स्विफ्ट कॉपी भेजना रहेगा, so that we can match it with the remittance amount and we can assign the units to you. Step 1 folio creation, step 2 transfer of units, sorry transfer of funds and unit allocation. इस तरीके से दो पार्ट्स में होगा. फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हमें आपको भेजने रहेंगे वेन एवर द इन्वेस्टमेंट इज डन. दे कैन ऑल्सो डू इट आफ्टर द फोलियो क्रिएशन और दे कैन डू इट आफ्टर द फंड ट्रांसफर, जैसे ही इन्वेस्टर कंफर्टेबल है, बट उन्हें हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने रहेंगे. And once the units are assigned from our end, we will send an email to the investor for the statement of account. And similarly, every month statement of account हमारे अकाउंट से उनको जाते रहेंगे जब तक कि हम अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप ना कर ले. वी आर वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन डेवलपिंग अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म so that we can assign login IDs to users so that they can check their statements and all the details anytime they want. But अभी के लिए, because it is a new process, because it is a new product, everything will be done via the email. So आप या तो इस email ID पे email भेज सकते हैं, और you can reach out to me directly and we can provide you all the documents required. So this is more so in regards to the process. Now I can take some questions from the chat. Theme, value investing, time frame 3 years. What are expected returns? ठीक है. Risk profile for this fund is high risk because 100% equity, so very high risk भी कह सकते हैं. Benchmark है MSCI All Country World Index, that is the benchmark for this fund. Time frame is 3 to 5 years, correct. Expected returns are approximately 11 to 13%. And expected returns we all understand कि कोई guaranteed नहीं होता है. This is what we are expecting कि 11 to 13% return USD में केगर रहेगा इसका approx. Second question is, can NRIs invest in this fund through NRO NRE bank account? Answer is no. This fund is not for NRIs. This fund is only for RIs and corporations within India, not for NRIs. Can someone send USD directly from their US bank account? Yes. If they are a resident Indian, let's say कि 5 साल 10 साल पहले वो US में थे for their job, now they have come back to India, but they still have some money in US, they can invest. But the citizenship for that investor has to be Indian. The tax status has to be Indian.
only then can they invest this into the global equity fund. If their residency or the status is US or Canadian, they cannot invest in this product. And if there is any more questions, now is a good time to ask. थैंक यू सर। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन एक एक करके चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एल्स यू कैन रेज योर हैंड्स आल्सो। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। रोहित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Residence is India, but citizen of another country. No, the answer will still be no. Citizenship should also be Indian. Yeah, Mohit, good Rohit. evening. I'm Rohit here. Hi, Rohit. Yes. I have 3, 4 questions. First, since this is a global equity exposure, so does the investor need to declare this as a foreign asset in Schedule FA of the Income Tax Act? They have to declare that, but they will not be liable for any tax on this because the fund Okay. is paying the tax. Yes. So second question, because you are saying they are not liable for any short-term, long-term capital gain, Hmm. uh, because it is not a pass-through structure, then what is the section in which ये exempt है? How does the income tax department know that this is exempt? Because the return has to be shown. Say, suppose someone has invested 5 lakhs and he is redeeming 10 lakhs after 3 years. How does he show it as a tax exempt in ITR section? Can you elaborate the section, please? Yes, just give me 1 second. So first of all, we will provide them with a letter. We will have an annual letter that we will send out to each and everyone that the tax is being paid at the fund level, which is the same letter that they can show uh, to the tax people. And the form is 26AS. It will be reflected in form 26AS of the investors, and they can claim credit of the same against their income tax liability while filing their returns. So that is for TCS. If tax is not deducted, say I have invested only 5 lakh and I am redeeming 8 lakhs. So TCS तो कटेगा नहीं उस पे, तो 26 AS में reflect नहीं होगा वो transaction. But when I am making a gain of 3 lakhs, then how do I show it under which section in the ITR? Let me check. Section I'm not aware, to be really honest, that I'll have to confirm with the income tax team. But we will be issuing a letter every year when we do the taxation for our fund, which we will send out to the investors as well. के ये letter आप use कर सकते हो for the tax authority, but I'll find out the section of the Indian Income Tax Act for this particular product, and I'll get back to you, Rohit, on this. Yes, Mohit, there is a gentle request. I think you should share this presentation because it's a complicated procedure. Yes. And most of us are not aware of IFSC transactions in one go. So this Definitely, sir. presentation should very importantly be shared with Nivesh so that they can give us. Yes. Okay, Yes, and yes, one question, since does this DSP Global Equity Fund have a scheme information document or a fact sheet or something which can be shared with the clients? So right now we don't have a fact sheet available because this is a new product, but within 2 to 3 days, because our NFO is already ended and we will assign the units on 18th. So by 19th or 20th, we should have our portfolio available. So that is what you can download from our website. I can also share with the Nivesh team, and you can share it with your clients. के कौन से stocks रहेंगे portfolio में, to have a better understanding of the product. Yes, because clients may ask, and who's the fund manager for this? So the fund manager is Viraj Bisa. He sits out of Gift City itself, and the fund advisory team is out of Mumbai. So there is Mr. Natarajan and Mr. Jayesh in the fund advisory team. They have a experience of around 30 years combined in these similar products. And also there is the equity research team, the complete DSP AM team is involved very actively in the product. Thank you, Mohit, and all the very best for the fund. Thanks for answering the questions. Welcome, sir. Thank you. So thank you, sir, and thank you to all the participants also for joining with us.